Are you guys able to see my screen? Yes, it's Okay, visible. thank you. Okay. So for everyone who joined us yesterday, I would like to start with a quick recap of everything that we learned yesterday and what we learned before starting with our today's topic. So welcome everyone. We started off by learning about observational astronomy and what it means, what it stands for, and we learned what benefits we can get from observational astronomy in our day-to-day life. For example, GPS, faster travel, X-ray, etc. तो हमने शुरुआत की थी ये जानते हुए कि ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी है क्या और उसके हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में क्या फायदे हैं। और उसके बाद हमने नोबेल लॉरिएट्स के बारे में जानने के बाद हमने पता किया कि क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं एस्ट्रोनॉमी को पढ़ते हुए, ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी को शुरू करते हुए। सो वी फर्स्ट लर्नड अबाउट द कॉम्प्लिकेशंस दैट मे अराइज while starting to get into the field of observational astronomy. So it ranged from astronomical distances to small sizes of objects, and or the planets or stars that are very dim and do not shine that bright in the night sky. Then there is atmospheric turbulence. There was light pollution. So ऐसी काफी सारी चीजें हमने देखी, जैसे कि कितना डिस्टेंस हो सकता है दो चीजों के बीच में, उनको ऑब्जर्व जिसको हम कर रहे हैं, कि किसी की रोशनी कम हो सकती है, किसी का साइज छोटा हो सकता है, और एटमॉस्फेयर के टर्बुलेंस की वजह से हमारी इमेज क्लियर नहीं हो सकती, और लाइट पोल्यूशन भी एक रीजन हो सकता है जिससे कि हम नहीं देख पाते, कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं हमारे ऑब्जर्वेशंस में। सो अदर चैलेंजेस वर आल्सो द blocking of visible blocking of electromagnetic magnetic radiation other than visible rays through our atmosphere. Then there is obstruction in the intergalactic medium itself. सो हमने काफी और चीजें भी पता करी कि हमारे एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज आती हैं, और उसके अलावा क्या क्या ऑब्स्ट्रक्शन हमारे गैलेक्सी के अंदर ही होता है और बिटवीन गैलेक्सीज भी होता है, तो उससे भी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती क्या है, वो जनरेट कैसे होती है, कि कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में पीरियोडिक चेंज की वजह से आती है, और अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रेंज में सेम ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देता है, क्या हम डिफरेंट व्यूज देख सकते हैं उस सेम ऑब्जेक्ट के। So we learned about electromagnetic radiation, how it generates, what it is, and then we saw different objects, sorry, same object through different lenses, from radio to microwave to infrared rays to visible range and even to gamma rays, how these objects, how the same objects look different in different wavelengths. Then we learned about different messengers of the cosmos. We learned about cosmic rays, neutrinos, and gravitational waves, which are mostly high energy events that occur in our universe. And then they sent us some particles, some smaller particles called neutrinos, or even in some rare occurrences, gravitational waves, which are ripple through space and time. तो हमने और भी पढ़ा कि क्या क्या हमारे पास और तरीके हैं ऑब्जर्वेशंस के, जिसमें कॉस्मिक रेज आती है जो बहुत एनर्जेटिक इवेंट्स में कुछ पार्टिकल्स बहुत तेजी से हमारे एटमॉस्फेयर को एंटर करते हैं, उनकी वजह से होती है। कुछ न्यूट्रिनो जैसे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और कई बार इतने एनर्जेटिक इवेंट्स होते हैं जिससे कि हमारे स्पेस टाइम में ही कोई रिपल आ जाता है। Then we moved on to history and basics, in which we learnt about the very basics of observational astronomy, including sun and moon. तो उसके बाद हमने रुक किया हमारा सूरज और चांद की बहुत बेसिक ऑब्जर्वेशंस के बारे में, कैसे वो पीरियोडिक होता है, क्या चेंजेस आते हैं, डे लाइट टाइम में विंटर में ज्यादा छोटे दिन होते हैं और समर में ज्यादा बड़े दिन होते हैं, डे लाइट टाइम कैसे रहता है। और हमने एक एग्जांपल सीखा इसका स्टोनहेंज में, और कैसे पूरे साल में सन की पोजीशन चेंज होती है, और वो हमारे एंसेस्टर्स को पता था। So we learnt about sun and moon, and we saw that there is difference in daylight in winter and summer. Then we talked about Stonehenge and how our ancestor knew about different position of sun at different time of the year.
and how they constructed these structures to tell time of the year. And then we moved on to the moon. We from the phases of moon, we tried to make inferences and conclusions of what the shape of moon could be, and if it's reflecting the sun or it's originating its own light. And we concluded that it reflects sun's light. And then we figured out that it's a period of 28 days cycle that moon repeats itself. So these were some of the main observations that we made. चांद को देख के हमने ये पता किया कि 28 दिन के बाद अप्रोक्सीमेटली एक साइकिल रिपीट होती है, जिसमें कि सेम तरीके के फेजेस हमें दिखाई देते हैं, और धीरे धीरे वो रिपीट करता है अपने आप को 28 दिन में। हमने ये भी कंक्लूड किया कि वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, ना कि अपनी खुद की रोशनी देता है। और उसकी शेप भी हमने अप्रोक्सीमेट पता करी कि उसकी शेप क्या हो सकती है, जो कि स्फेयर ही हो सकती है, क्योंकि ऐसे शेप सिर्फ स्फेयर के पॉसिबल होते हैं। Then we moved on to some events that happen in the night sky or in the sky in general. So these are solar and lunar eclipses. So talking about solar and lunar eclipses, we also developed some models, what might be happening in the sky, what might be happening that causes these kind of eclipses. So in case of solar, the moon covers the sun, and in case of lunar eclipse, the moon is covered by the shadow of earth cast by sun. तो हमने देखा कि एक्लिप्स जैसे या फिर ग्रहण जैसे कुछ Sorry to इवेंट interrupt, Anirudh. I think your screen is not visible right now. Can you please check? फॉर श्योर। Can anyone turn their mic on and tell me if they are able to see the screen, if I am doing something on the screen, if they are able to see it? No, we are not able to see the screen. Okay, I'll try and only share the presentation screen. Is it visible now? Yeah, it is visible. Okay, thank you. तो हम बात कर रहे थे कि कैसे ग्रहण जो होते हैं वो हमने देखे कि उनका क्या हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्या पॉसिबल मॉडल हो सकता है उसका कि कैसे ग्रहण हो रहा है, और क्या हमें ग्रहण में अलग देखने को मिलता है, व्हाट डिफरेंट थिंग्स वी कैन see and observe in the during the eclipse. So obviously this is a disclaimer for everyone. Please do not try to look at solar eclipse with naked eyes, because it can hurt your eyes. And but with protection, when we see the solar eclipse, we see some kind of a layer that is otherwise unseen due to the brightness of the sun itself. But otherwise we see the atmosphere of the sun, which is really active region. तो हमें एक ऐसा दृश्य देखने को मिलता है जब सूर्य ग्रहण होता है, जो कि हमें सूरज की रोशनी की वजह से इन जनरल देखने में नहीं मिलता, कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर है सूरज का जिसमें कि बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है, कुछ ना कुछ चल रहा है उसमें. Then we talked about other objects in the night sky, for example stars, which our ancestors made constellations of to remember the names and to remember their locations. And then we looked at some objects which move very differently from the stars, which are called planets or wanderers. तो हमने तारों के बारे में देखा, नाइट में तारे दिखते हैं हमें, और कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो घूमते रहते हैं डिफरेंट मोशन में कंपेयर टू जो तारे घूमते हैं. और उसके अलावा हमने देखा कि कैसे तारों का मोशन कैसे होता है, और कैसे हम सेंटर मान सकते हैं पोलैरिस को, और यही रीजन है कि हमें पता चला कि शायद हम नहीं, मतलब शायद तारे नहीं घूम रहे और हम एक एक्सिस पे रोटेट कर रहे हैं. So we then observed the star's motion, and we concluded that there is a point around which all the stars are rotating, and that is Polaris. And then we moved on to some advanced observations that people did over the period of time, which included retrograde motion of planets and some events or smudges in the sky, and which led us to wonder what this kind of motion is, how can it be explained. Since it cannot be explained by a simple model, we moved on to a retrograde motion model. So last में हमने ये पढ़ा था कि कैसे कुछ और लंबे समय की ऑब्जर्वेशन करके हमें पता चला कि कुछ और इवेंट्स होते हैं स्काई में, कुछ और धब्बे दिखते हैं, कुछ अलग अलग चीजें दिखती हैं स्काई में, नाइट स्काई में, और कैसे अलग अलग प्लैनेट्स का
रेट्रोग्रेड मोशन होता है, जो कि बैकवर्ड मोशन होता है, जब प्लैनेट आगे जाते जाते थोड़े टाइम के लिए पीछे और वापस जाता है। तो इन सब मोशन से हमें पता चला कि सीधा मोशन नहीं होता प्लैनेट्स का, और हम उससे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और हमें एक आइडिया मिला कि कुछ और भी होता है नाइट स्काई में देखने को। तो हमने अपना सिंपल मॉडल छोड़ा और दूसरा मॉडल बनाया, बट दिस मॉडल डिड नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग because of the reason that there was no possible explanation for why these planets are moving in such complicated manner. तो हमारे पास कोई वजह नहीं थी ये बताने के लिए कि ये planets इतने complex shape में क्यों move कर रहे हैं। सो ये जो मॉडल है लंबे टाइम तक टिका नहीं, और हमें कोई और नया मॉडल लाना पड़ा, which brings us to telescopic observations. और यहाँ पे हम बात करेंगे टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेशंस की, और क्या क्या हमें टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेशन से प्रूफ्स मिले, क्या क्या हमें चीजें सीखने को मिली। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट थिंग दैट इज हीलियोसेंट्रिक मॉडल. So we will start by talking about telescopic observation, what it taught us and what proofs it gave us to develop our new model, which is called heliocentric model. Now the meaning of heliocentric model itself is the sun-centered model. Helio is the name for sun, and it means sun-centered model. So now the universe is not centered around Earth, but rather around the sun. So this was first given by a scientist named Nicholas Copernicus, and independently given by some other scientists as well, for example Aryabhatta. तो ये जो मॉडल है, जो सूरज को केंद्र मानता है हमारे यूनिवर्स का, वो कहलाता है हीलियोसेंट्रिक मॉडल, जो कि पहले निकोलस कोपरनिकस ने दिया था, और इंडिपेंडेंटली आर्यभट्टा जैसे कुछ और साइंटिस्ट ने भी दिया था। और ये सिंपली ये कहता है कि अब अर्थ जो है वो हमारे यूनिवर्स का सेंटर नहीं है, जो कि ये एक्सप्लेन करने के लिए था कि रेट्रोग्रेड मोशन क्यों हो रहा है, which was to basically explain why there is a retrograde motion visible in the sky. So telescopes were originally invented to look at the things that are really far away, obviously. So people used to use them for like while traveling through the sea, or to look at very far away things. तो जो टेलीस्कोप का आविष्कार हुआ था वो दूर की चीजों को देखने के लिए हुआ था। तो जैसे कि जब कोई नाव पे जा रहा होता था, कोई शिप पे जा रहा होता था, तो दूर से देखने के लिए कि जमीन कितनी दूर है, एटसेट्रा, इन कामों के लिए यूज होता था। But there was one man named Galileo who pointed these telescopes towards the sky, made it focused it and made it advanced and made it more powerful. And then he did some really good observations for his time. These observations were very remarkable and detailed. So here you can see this is the original drawings of Galileo, and you can see these are very detailed drawings of the moon. So you can see some of details on the moon are very intricate, and you can see that he has drawn some kind of craters on the moon, and he started to wonder why moon, which is supposed to be very smooth and stuff, and it does have some pattern, but why does it have some kind of a valley or a mountain on it? तो टेलीस्कोप जो पॉइंट किया था आसमान में, वो सबसे पहले इंसान थे गैलीलियो, और उन्होंने काफी सारी ऑब्जर्वेशंस करी, काफी सारे नोट्स बनाए, ड्राइंग्स बनाई, और उन्होंने देखा चांद की तरफ और काफी और चीजों की तरफ। तो ये ड्राइंग जो है ये ओरिजिनल गैलीलियो की ड्राइंग्स हैं, और उसमें डिटेल्स आप देखिए तो उन्होंने अच्छे से डिटेल करके दिखाया है कि कैसे कुछ गड्ढे हैं चांद पे, और कुछ ऊपरी सतह पे स्ट्रक्चर्स हैं चांद पे। और उन्होंने फिर ये सोचना शुरू किया कि इतना डिटेल्स चांद पे क्यों है, कहाँ से आए, और बाकी के जो ऑब्जर्वेशंस है वो क्या सेंस बनाते हैं। So he moved on to other kind of observations, and one of the observation that led him to believe that there are different things in the sky, not only stars and stuff, but these planets are very different from the stars. So one of these observation was the observation of the phases of Venus. So initially we were not aware if Venus has even phases. We just saw it as an evening star. It's called evening star because it is seen either at the evening when the sun is setting, or at the very early in the morning just before the sunrise. So we can see Venus at that time. It's very bright, but nobody had seen the phases of Venus. So Galileo saw this and thought like, why are we seeing the phases of Venus? And secondly, why is the relative size of Venus in the sky changing so drastically?
तो पहली एक ऑब्जर्वेशन ऐसे गैलीलियो ने की कि उन्होंने वीनस जो है उसकी ऑब्जर्वेशंस की, और उन्होंने देखा ऐसे इमेज में कि जो वीनस है उसका एक तो साइज भी बड़ा होता जा रहा है और बाद में छोटा हो जाता है, और उसके फेजेस हैं जैसे कि हमारे मून के फेजेस हैं। तो स्टार जैसी कोई चीज, स्टार के अलावा भी कोई चीज है, मून के अलावा भी कोई चीज है जो हमारे शायद करीब है और पास और दूर आती जाती रहती है, शायद इसलिए साइज चेंज हो रहा है इसका। उसके बाद सिर्फ ये बात नहीं थी कि उन्होंने ऑब्जर्व किया, बड़ी बात ये थी कि उन्होंने बाकी लोगों को भी ऑब्जर्व कराया, बाकी लोगों को भी दिखाया, तो उनके पास एक प्रूफ। Just a big deal that he had these observations, but it was a big deal that he was able to replicate these observations and show others his observation, which made his proofs so strong. So the main pivoting point for this heliocentric model to take charge was when Galileo discovered Jupiter's moons. So Galileo was observing Jupiter at one point, and he saw there were some small dots near Jupiter, very close to Jupiter, and he saw that there were 4 specific dots that would go around Jupiter and sometimes even behind the Jupiter. And he concluded that these were the moons of Jupiter which were orbiting it. तो गैलीलियो ने ये पाया कि जुपिटर के आसपास कुछ 4-5 डॉट्स थे, और उन डॉट्स में उन्होंने देखा कि ये जो डॉट्स हैं ये थोड़ा सा घूमते हैं जुपिटर के आगे पीछे, कभी पीछे चले जाते हैं, कभी थोड़ा सा दूर चले जाते हैं, और ये इसके इर्द गिर्द ही चक्कर लगाते रहते हैं। तो गैलीलियो को पता चला कि ये जुपिटर के शायद मून्स हैं जो कि हमें दिखाई दे रहे हैं, और इससे पता चला कि जो अर्थ है वो जरूरी नहीं है कि जो धरती है हमारी वही पूरे ब्रह्मांड का केंद्र हो। सो ही बेसिकली कंक्लूडेड दैट इट्स नॉट necessary for everything to be earth centered. Some things can be, for example, Jupiter centered. और ये भी मेरे को काफी वार्निंग देना चाहिए कि गैलीलियो ने सन की तरफ टेलीस्कोप घुमाया और काफी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि उसके बाद उन्हें टेम्पररी ब्लाइंडनेस हो गया था, बहुत डैमेज हो गया था उनकी आंखों को, और आपको और भी ज्यादा शायद हो सकता है अगर आप सन को देखें अपनी आंखों से। बट सन को उन्होंने ऑब्जर्व किया और सन पे भी उन्होंने कुछ धब्बे पाए, तो उन्होंने ऐसा कंक्लूड किया कि सन का भी थोड़ा स्ट्रक्चर है, सन पे भी कुछ कॉम्प्लेक्स है। बट जैसा कि आप देखते हैं कि मैग्नीफाइंग ग्लास से कितना हॉट हो जाता है सरफेस, तो आपके आंखों पे भी पड़ सकता है कुछ असर, तो मत देखें, कुछ फिल्टर या कुछ लगा के देख सकते हैं। So Galileo started observing even sun with telescope, and I would advise you not to do that, since he did not have any kind of equipment to protect himself. He was temporarily blinded, but he did manage to see some kind of spots on the sun, and he also concluded that sun also has some kind of a structure, some kind of complexity to it. And as you can see, that magnifying glass kind of burns the grass on the ground, so it's advisable that you do not directly look at the sun, especially through a telescope. And that was when we started to believe, because of Galileo's observations, that there is a heliocentric model. And sooner than the later, the heliocentric model was starting to be accepted. And then we concluded that most of the planets that are going in retrograde motion, backwards motion, are nothing but a result of the fact that they are not revolving around the earth, but they are revolving around the sun. तो हमने ये कंक्लूड किया गैलीलियो के ऑब्जर्वेशन से कि हीलियोसेंट्रिक मॉडल है, जिसमें सूरज हमारे सौरमंडल का केंद्र है। तो उसके बाद हमने ये भी कंक्लूड कर लिया कि जो रेट्रोग्रेड मोशन हम देख रहे थे कि प्लैनेट पीछे जा रहा था, वो सिंपली इसलिए था क्योंकि वो अर्थ के ऑर्बिट ना करके सन के ऑर्बिट कर रहे हैं। And then there were other scientists who contributed to our understanding of the universe, which include Kepler. So for example, Kepler gave laws of planetary motion, which included how much time does it take for planet to move in what section of its orbit around the sun, and how the orbits would be shaped and etc. तो केपलर ने हमें बताया कि कितने समय में कितना एरिया जो है वो एक प्लैनेट कवर करता है, और क्या क्या मतलब क्या क्या शेप हो सकती है, क्या क्या आकार हो सकता है उसके ऑर्बिट का।
तो अगले सेक्शन में बढ़ते हुए, जिसका नाम एमेच्योर एस्ट्रोनॉमी है, इसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम खुद कुछ ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं। अगर हमें ऑब्जर्वेशंस करनी है, कुछ सीखना है, तो हमें क्या क्या तरीके अपनाने पड़ेंगे और क्या क्या ट्रिक्स और टिप्स हैं हमारे पास। तो मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट सेशन, दैट इज एमेच्योर एस्ट्रोनॉमी, वी विल ट्राई टू लर्न व्हाट वी कैन डू in our backyard probably, what observations we can make, and what kind of things that we can observe, or what are the tips and tricks for amateur astronomy. So first and foremost, before studying any area, you should know the very basics, what things are called and what are the nomenclatures. And so is it so it is important to know your units. So first of all, in astronomy, it is important to understand that a lot of the times we use CGS units instead of SI. This is not nothing like a rule, like you can't use any other units. You can, but you have to mention it. But in general, in astronomy, we use CGS units, which is centimeter gram in second, instead of the usual meter kilogram in second. So in terms of distance, we sometimes use light years as a unit of distance. When you hear the word year, you might think of it as a unit of time, but light year simply means the amount of distance that light travels in a year. So it's distance. So how much distance is it? It's 9.46 into 10 raised to power 12 kilometers, a very huge distance. Then there is astronomical unit, which is basically the distance, average distance between sun and earth, and that is 8.3 light minutes, as we talked in beginning of the lecture, which is also 1.496 10 raised to power 8 kilometers. Then there is another unit of distance, that is parsec, and we use this unit by defining it by angle. So imagine that you are observing one star near you. This explanation is important to understand what one parsec is. So imagine you're observing one star near you, and you wait 1 year to observe it again. So you make this kind of a triangle thing, triangle in geometry, with the star and with respect to the sun. So since you're revolving around the sun, so make this kind of a triangle. And apparent parallax, parallax basically, parallax is when you see an object from two different sides, and it appears to change its side based on where you are looking from. For example, if I look at my finger from here, it seems to be appearing on my left, and when I go there, there is a parallax, there is a difference in its position, apparent position. So that is parallax. And when this angle of parallax is 1 arc second, 1 arc second is a very small angle, which is 1/60th of the 1/60th of 1 radian, which is 1 unit of angle. So this is 1 arc second of an angle. And when this is 1 arc second of an angle for parallax, then that distance is called 1 parsec. Distance for which an object observed has a parallax angle of 1 arc second, which is called 1 parsec. This is 3.26 light years. So basically, then there is also the radius of the sun. So radius of sun is this many kilometers. As we saw in the beginning of our lecture, that sun is very big compared to even the distance between earth and moon. So this is the radius of the sun. This is also sometimes used as a comparative radius for other stars. तो पहले किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें उसके नाम और उसकी यूनिट्स पता होनी चाहिए. सो उसकी यूनिट्स पता करते वक्त पहले हम बताएं कि हम सीजीएस यूनिट यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ एसआई यूनिट. ये कोई रूल नहीं है, बट हम यूज करते हैं इन जनरल. ये हमारे काम को आसान बनाता है कई बार. तो इसलिए सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड की यूनिट हम यूज करते हैं. डिस्टेंस के नाम में लाइट ईयर की यूनिट होती है, जैसा कि हमने बात करी कि एक ईयर में लाइट कितना ट्रैवल कर लेती है, वो यूनिट है ये. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये है कि अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस क्या है अप्रोक्सीमेटली. एक्यूरेट नहीं है, अप्रोक्सीमेट है. तो अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस,
जैसा कि इस डायग्राम में भी दिखा रखा है, ये येलो सन है और ब्लू अर्थ है, तो ये 1 AU हो गया, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक पार्सेक वो डिस्टेंस होता है, मान लीजिए कि आप अर्थ और सन को रिस्पेक्ट में रख के कोई स्टार को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और अगर वो आप अर्थ से ऑब्जर्व करते वक्त उसका एंगल जो है, जो सन से बन रहा है, वो मान लीजिए कि वो स्ट्रेट लाइन है, और अर्थ से अगर उसका पैरेलैक्स एंगल, पैरेलैक्स तब होता है जब हम किसी चीज को दो तरफ से देखते हैं और उसका पोजीशन में थोड़ा सा शिफ्ट आता है एपरेंट पोजीशन में, हालांकि वो चीज वहीं पे है, लेकिन मान लीजिए आप विकेट की तरफ देख रहे हैं, तो इधर देखेंगे तो थोड़ा सा लेफ्ट साइड ज्यादा दिखेगा और इधर देखेंगे तो थोड़ा राइट साइड ज्यादा दिखेगा। तो वो शिफ्ट अगर 1 आर्क सेकेंड का होता है, तो उस ऑब्जेक्ट के लिए जो हमारा डिस्टेंस है वो 1 पार्सेक हो जाता है इन कंपैरिजन टू सन एंड अर्थ। तो इस ट्राइंगल में वो 1 पार्सेक हो जाएगा, और इतने लाइट ईयर्स होता है वो 1 पार्सेक। और कई बार जब हम बाकी स्टार्स की बात करते हैं तो हम सन के कंपैरिजन में उसका रेडियस लिखते हैं, जैसे कि कोई स्टार है जो 2 सोलर रेडियस का है, मींस कि सन से दुगना बड़ा है, तो तब हम सन के रेडियस की बात करते हैं, इसलिए यहाँ पे सन का भी रेडियस हमने बता रखा है। Mass is also a very important unit that we use in astronomical objects, since there are very astronomical objects, very huge objects. So we use the solar unit, which is 1 solar mass, which is 10 raised to the power 30 kg. Oh, sorry, this is a little bit incorrect. There is an error here. This is supposed to be 10 raised to the power of 30 kg. So this is 1 solar mass, and we use this as a unit. For example, there is a star that is 10 solar masses, which means it's 10 times the mass of sun. तो मास की बात करते हुए भी हम कई बार यूनिट्स यूज करते हैं, जैसे कि 1 सोलर मास, इसका मतलब है कि एक सन में जितना मास है उसके कंपैरिजन में किसी और चीज में कितना मास है। तो यहाँ पे ये 10 के ऊपर 30 आएगा, 10 रेज टू पावर 30 है ये केजी। तो ऐसे भी हम मास मेजर करते हैं। टाइम in terms of year, 1 Julian year of 365.25 days. आपको पता होगा कि 4 साल बाद लीप ईयर आता है. You must be aware there is a leap year every 4 years. So that is because there is 2.5 extra day. So after 4 years we celebrate a leap year in which we include this 2.25 day, and that makes a Julian year. Julian year, for anyone who's confusing it, maybe he is not understanding why we are using this term Julian. It's basically because we use the Julian calendar, that is why. So the calendar that we use in modern day is Julian calendar, and that is what this represents. One day is of 86,400 standard seconds, and a Julian century is of 36,525 days as expected. तो हम टाइम को भी ऐसे मेजर करते हैं, तो जूलियन ईयर, जूलियन सेंचुरी या 1 डे। तो जूलियन ईयर बेसिकली जो कैलेंडर हम आज के समय में यूज करते हैं उसमें ये इतने दिन दिखाई देते हैं और एक साल में, और हम 4 साल बाद लीप ईयर इसीलिए मनाते हैं क्योंकि ये डे काउंट हो जाए। और एक दिन में इतने सेकंड होते हैं, और एक जूलियन सेंचुरी में या फिर शतक में इतने दिन होते हैं। ये हमारी यूनिट्स हो गई। अब आपको जब ये आप ऑब्जर्वेशन करने जाएंगे, कहीं पे भी बाहर जा रहे हैं आप, या फिर कुछ स्टार आपको देखना है, कोई प्लैनेट देखना है, तो आपको अपने आप को ओरिएंट करना आना चाहिए, अपने आप को पोजीशन लेनी आनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप कहीं खेत में गए हैं मान लीजिए, तो आप वहां पे अपने आप को कैसे ओरिएंट करेंगे कि मेरे को ये स्टार देखना है तो मैं किस तरफ देखूं। तो सबसे पहला आंसर हमारे पास आता है नॉर्थ साउथ का, कि नॉर्थ या साउथ की तरफ देखें और उस तरफ अपने आप को पोजिशन कर लें। सो वो कैसे देखेंगे कि नॉर्थ हेमिस्फेयर में सप्तऋषि का जो कॉन्स्टलेशन होता है, बिग डिपर जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वो पॉइंट करता है, उसके जो लास्ट 2 स्टार्स होते हैं वो पॉइंट करते हैं नॉर्थ स्टार की तरफ, जिसको पोलैरिस भी बोलते हैं, हमने पहले भी पढ़ा, पोलैरिस बोलते हैं इसको, और वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है। तो अपनी चेहरे को उस तरफ पॉइंट कर लें, ये आपकी डायरेक्शन हो गई। So first of all, it's very important to orient yourself when you are starting with observational astronomy, when you're trying to point your telescope towards a star or trying to look at some planet. You must be thinking, where should I look? So one easy step is to look at the Big Dipper, which is a constellation in northern hemisphere.
And when you look at this Big Dipper, you will see that there are two stars in a line pointing towards one other star, that is Polaris. So at the end of this question mark like shape, this is a shape like a question mark. So at the end of it, you will see two stars pointing towards Polaris. So when you see this star, you might want to orient yourself so that you understand where you are standing. You are facing north. And in case that you are in a southern hemisphere, maybe in a country like Australia or Brazil or something, then you might have to look for some different constellation. There is a cross in southern hemisphere which points towards the south. So you have your directions that way. तो अगर आप किसी कंट्री जैसे कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या ब्राजील जैसी कंट्री में रहते हैं, तो वहां पे आपको दूसरे कॉन्स्टलेशन को देख के अपने आप को ओरिएंट करना है. So this was the first step. Second step is understand the word horizon. So obviously you cannot look beyond a point. You can only look so far, and wherever your point of observation ends, because obviously Earth is not flat, Earth is curved. So your point of observation ends at this, at the line of sight, and this is called your horizon. It's circular because if you rotate on an axis, move around one axis, and you see everywhere, you will see that you have this circular boundary to your vision. तो जब भी आप कहीं पे खाली जगह पे, मान लीजिए समुद्र में या फिर फील्ड में कहीं पे आप देखते हैं, तो आपको देखेगा दूर से दूर आप एक लिमिट तक देख सकते हैं, क्योंकि अर्थ जो है वो इनफाइनाइट नहीं है, फ्लैट नहीं है. तो आप इतनी ही दूर देख सकते हैं जहां तक आपकी नजर आपको ले जा रही है. और पूरा घूम के देखेंगे तो हर तरफ सर्कल में आप एक एरिया बना सकते हो, उसको आप होराइजन कहते हैं, जहां से सनसेट होता है या फिर जहां से सनराइज भी होता है. So this horizon is the same point where sunrise and sunset are seen. So after that, you should know azimuth and altitude of any object that you want to observe. So what these are, we'll talk about it. So first of all, the point directly above you, wherever you're standing, the point directly above you is called the zenith. So it's just a name, zenith. And you are preferably looking towards north. So here is your observer, that is you. You are looking towards north. The point above you is zenith. And the distance of the star in, so you can imagine the entire sky as a dome, and you can use simple two directional coordinates to orient yourself towards that star or that object. So first of all, when you move around in the circle along the horizon, that is called the azimuth. So that tells you how far, in what direction you have to move in terms of eastward from the north or the westward from the north, how far you have to move. That is the angle of azimuth. And then how how much upwards you have to look in order to observe your object, that is the altitude. So if you're moving your neck upwards, that is uh, you are looking towards what altitude that object is. तो कभी भी आपको कोई ऑब्जेक्ट देखना हो तो दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, एजिमुथ एंड एल्टीट्यूड. तो कभी भी जैसे आप ऑब्जर्वर हैं, आप नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, तो अगर आप नॉर्थ की तरफ देखते देखते आपको कोई स्टार देखना है, कोई ऑब्जेक्ट देखना है, तो आप अपने आप को रोटेट करेंगे. तो जिस तरफ आप रोटेट करें, कितने एंगल से रोटेट करेंगे, वो होता है आपका एजिमुथ. और अगर आपको ऊपर देखना है तो कितना ऊपर देखना है, वो होता है आपका एल्टीट्यूड. सो ये बेसिक्स हैं कि आपको कैसे कोई भी चीज ऑब्जर्व करनी है. यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको दिखा रखा है कि होराइजन जो है वो, बिकॉज आप इतना ही दूर देख सकते हैं कि जहां तक अर्थ कर्व नहीं हो रही, तो वहां तक आपका होराइजन बन जाता है. फिर आपके ऊपर जो भी पॉइंट है, आप कहीं पे भी खड़े हो, आपके ऊपर वाला पॉइंट जेनिथ कहलाएगा, और वहां से आप ये सब ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं. सो हियर यू कैन सी इन द डायग्राम ऑफ अर्थ, you are standing somewhere in the northern hemisphere, and wherever you are standing does not matter. The point directly above you is called zenith, and the line that is basically your observation line below which you cannot see is your horizon. Then there are some tricks that you can use to estimate the angle that you're looking at. So the simple thing that you are going to do is stretch out your arm
to the arm's length as much as you can, and then use your fingers to estimate an angle. So for example, if someone says that you have to look, let's say 5 degrees away from that northern star, so you can use simply 3 fingers close together at an arm's length, far away from you, at an arm's length as much as you can. That would make a angle of 5 degrees. So you just move your Okay. head 5 degrees. Uh, Hello? Does anyone has any question? Please write down your, if you have any questions, please write them down and I will be sure to look at that at the end of presentation. So that is the trick that you use. And then there are tricks for 10 degrees angle. You clench your fist and from your knuckle to the other knuckle, that is 10 degrees. When you make a rock sign, that is 15 degrees approximately. And when you make this phone call sign, that is approximately 25 degrees. So these are like tricks that you can use while you're observing an object. So it's important to note that it's approximate, it's not very accurate, obviously. And then there is this thing that you are observing. So this angle that you're observing, this is just telling you the apparent size of that thing, whatever you're observing. For example, you're observing moon. So when you're observing moon, if you use your finger, whatever finger you're using to observe moon, and you are covering your moon with one pinky finger, for example, then it's telling you the apparent angular size of that thing, angular size. So this is the kind of a formula that we have. Given that you already have an angular size a for that object, and you know the distance between that object and yourself, you use this formula to derive the size of that object. अगर आप किसी भी चीज की तरफ देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप चांद की तरफ देख रहे हैं और एक आपने छोटे उंगली से चांद को ढक लिया है, तो आपको उससे उसका एंगुलर साइज पता चलता है, और वो एंगुलर साइज ऑब्वियसली डिग्री या रेडियंस में होगा. तो अगर आप उसको इस एंगुलर साइज को और उस ऑब्जेक्ट के बीच में और आपके बीच में जो डिस्टेंस है उसको जानते हैं, तो आप उसको यूज करके उस ऑब्जेक्ट का भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं. ये एक बहुत बड़ा टूल है, ज्योमेट्रिकल टूल है, जो कि हम यूज करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज. अच्छा, तो ये हमारे एंगल मेजरमेंट्स थे. अब हम कुछ फैक्ट्स पे आ जाते हैं या फिर कुछ फिनोमिनन्स पे आ जाते हैं कि हम क्या क्या देख सकते हैं और क्या क्या प्रैक्टिकल चीजें हैं. So now we are coming to some phenomena that we observe and some things that we observe in nature. And one of that is the fact that sun's light is parallel. The sunlight that comes on earth is parallel. So you will see every time walking around in the street at the daytime, you will see that the shadows forming for everyone is in the same direction. No matter where they are standing, it's in the same direction. There is no difference in the angle of shadow. If I'm walking here and someone's walking here, the shadow would be formed in the same direction, same way. So this is one example of it. These are clouds that are blocking the sunlight, and you can see that although the shadow is getting fainter and fainter as the light is being diffused further away from the cloud, so it's getting fainter, but still the shadow is in the same direction, and it seems that the rays of the sun coming are parallel. So why does this happen? So first of all, when you look at when you realize how big the sun is already and how far away the sun is, because even if you make earth as this small dot, this is still not the accurate depiction of how far away the sun is. Sun is very far away. This is very close depiction of sun, but we cannot put these accurate sizes and distances on one screen. That's why we are using it. So the fact that how far away sun is indicates why or explains why this happens, that sunlight is parallel. Obviously the rays that are not parallel will already move away from the direction of the earth. Some of them might actually hit, but majority of them would move in directions that do not touch the earth.
So for the simple reason that Earth is so small and so far away, majority of the light that is coming from sun is parallel. There are also possibility for some of the light rays to be originating from the same point where the parallel light rays are also originating. But still you can see, because the Earth is so far away and comparatively very small, majority of the light that even deviates slightly from the parallel path are already missed by Earth. तो जब भी हम कभी भी दिन में निकल रहे होते हैं और किसी की परछाई को देखते हैं, सेम डायरेक्शन में होती है वो परछाई, उसका रीजन ये है कि जो सन है वो इतना बड़ा और इतना दूर है कंपेयर टू अर्थ, यहाँ पे भी वो फिट नहीं आएगा, इसलिए हमने थोड़ा पास करके दिखाया इनको। तो जितनी भी लाइट आती हैं जो सन से आती हैं और वो किसी एंगल पे जा रही होती हैं, वो ऑलरेडी मिस कर देती हैं अर्थ को। और जो मान लीजिए कि एकदम डायरेक्टली हमारे सामने से जो सन की जो पार्ट जो सन का है जो एकदम डायरेक्टली सामने हमारे, वहां से भी अगर आ रही है, तो वो लाइट भी अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होगी, थोड़ा सा भी 19-20 होगी, तो वो अर्थ इतनी छोटी है कंपेयर टू सन कि वो मिस कर जाएगी। और इतनी दूर है स्पेशली कि वो जो डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग जो लाइट्स हैं वो ऑलरेडी मिस कर जाएंगी। इस वजह से मेजॉरिटी ऑफ द लाइट जो सन की अर्थ पे आती है वो पैरेलल रहती है। अब ये फैक्ट जो है कि सन की लाइट जो पैरेलल है, ये आप एक्सपेरिमेंट से भी देख सकते हैं, आप कंक्लूड भी कर सकते हैं किसी लॉजिक से भी। बट इससे हमें कुछ चीजें पता चलती है, और वो क्या है कि क्योंकि सन की लाइट जो है वो पैरेलल आ रही है, तो हम सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ निकाल सकते हैं। ये किया था एक एस्ट्रोनॉमर एराटोस्थेनीज ने, और इन्होंने ये मेथड यूज किया था अर्थ का सरकमफेरेंस निकालने के लिए। अब इस सिंपल फैक्ट से इन्होंने ये कैसे किया, तो एराटोस्थेनीज को एक बार पता चला कि कोई एक ऐसी जगह है जहां पे कि जो 12 बजते हैं जब, तब कोई भी शैडो नहीं दिखाई देती। कोई कुआं है या कोई जा भी रहा है सड़क पे, तो उसकी शैडो जो है वो या तो उसके पैर के नीचे आएगी या फिर दिखाई ही नहीं देगी, तो उसकी शैडो नहीं दिखाई देती। तो ये देख के उन्होंने एक दिन ऑब्जर्वेशन करी कि मैं यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करता हूँ और इसका डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, अपनी जगह से और उस जगह तक डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। जिस दिन ये शैडो पड़ने वाली है उस दिन डिस्टेंस भी निकाल लेता हूँ, और एक जमीन में कोई एक लकड़ी घुसा देता हूँ। जैसे कि ये लकड़ी मान लीजिए, ये जो मैं एरो से पॉइंट कर रहा हूँ ये लकड़ी है, ये लकड़ी घुसा देता हूँ और उसका एंगल नाप लेता हूँ, क्या एंगल है, ठीक है, कितनी दूर है जमीन पे, कितनी दूर परछाई पड़ रही है और उसका क्या एंगल है। So what Eratosthenes did was he found out that there is a place where at certain time of the day, at certain time of the year, the sun projects no shadow in a well, or if someone's moving, the shadow is directly beneath them. So he concluded that at that place the sun is in direct line of sight of the earth, or very centrally aligned with the earth at that specific place. And what he did was he from his origin place, he traveled to that place and measured the distance between them, while he instructed someone to place a pole at his point of origin, a pole that is stuck in the ground, and measure the angle that is between the shadow of the pole and the pole itself, so this A angle. So he measured that, and using it he made some diagrams and did some geometry. And since we have studied in our junior classes that for a parallel line, since the sun rays are already parallel, for a parallel line these are alternate angles which are always equal. And since we know what this angle is and we know what this distance is because he traveled, so we know this distance, we know this angle, we can easily, by using that, what part of the circle this angle is. So 360 divided by a, for example, let's say this is a 10 degrees angle. If we divide 360 by 10, so this is a 36th part of the entire earth, and then we multiply this distance by 36 and we get the circumference of the earth. So this gives us the circumference. This also gives us the size, since circumference is 2 pi r. So this gives us the size of the earth. तो एराटोस्थेनीज ने क्या किया कि उसने डिस्टेंस नापा, ये एंगल नापा, और उसके बाद ये डायग्राम बना के उसने कंक्लूड किया कि ये पैरेलल रेज आ रही हैं सन की, तो ऑब्वियसली ये जो एंगल है
ऑल्टरनेट एंगल है, हमने मैथ्स में ज्योमेट्री में पढ़ा है ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो ये सेम रहेंगे। और ये डिस्टेंस वो ऑलरेडी नाप चुका है, तो अगर ये डिस्टेंस नाप चुका है, ये एंगल उसको पता है, तो वो जानता है कि 360 डिग्री एंगल जो अर्थ का बनता है, क्योंकि अर्थ गोल है, तो 360 डिग्री एंगल है, उसका मैं पता कर लूं ये कितना हिस्सा है, तो ये भी उतना ही हिस्सा होगा। और इसलिए जब उस हिस्से से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास सरकमफेरेंस आ जाएगी, और सरकमफेरेंस से रेडियस भी आ जाएगा। तो अर्थ का हमें साइज पता चल गया सिर्फ इस सिंपल फैक्ट से कि जो सन की रेज होती हैं वो पैरेलल आती हैं। तो ये बहुत एक अच्छा ऑब्जर्वेशन है, ये आप खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप सर्च कर सकते हैं कि आज कहाँ पे शैडो नहीं बन रही है, वहां से डिस्टेंस पता कर लीजिए और घर पे कोई पेंसिल या कोई लकड़ी खड़ी करके उसका एंगल नापिए और आपके पास आराम से ये अर्थ का सर्कमफेरेंस आ जाएगा। If you are curious enough, you can try this experiment at home. Try to look up at internet what is the place where there is no shadow today at this point of time, and you can calculate distance from that place on Google, and then you can measure the angle between a shadow of the stick at your home, and then you can, after measuring this angle and knowing this distance on Google, you can easily calculate the circumference of Earth at your home. Then we came to the distance to the sun, and we tried to calculate it as well. Some people tried to calculate it. Aristarchus of the Samos was the first person to try this very successfully. So what he did was, again using geometry, he made a triangle between moon, earth and sun, and he tried to see what angle the moon and the sun make between the earth, and by measuring that angle he calculated the size, sorry, not the size, the distance to the sun. So basically we need to know the size of distance to the moon and this angle. And since we have all learned Pythagoras theorem and the sine and cosine, using that we can easily calculate what's the distance between earth and sun. तो ऐसा किया एक साइंटिस्ट जिनका नाम था एरिस्टार्कस ऑफ सैमोस। उन्होंने ऐसा किया कि ये डायग्राम बनाया और उन्होंने सोचा कि अगर मुझे मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस मिल जाए तो मैं जब भी आधा चांद होगा, whenever there is a half moon, I would observe the angle between moon and sun. जब भी आधा चांद होगा मैं मून और सन के बीच का एंगल निकाल लूंगा, ये वाला MES जो एंगल है वो मैं एंगल निकाल लूंगा, और मुझे एंगल मिल गया, ये डिस्टेंस मिल गया, तो मुझे ये वाला डिस्टेंस भी मिल जाएगा, क्योंकि हम सब ने मैथ्स में साइन को साइन के प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। और एंगल जो 90 डिग्री वाला जो ट्राइंगल होता है उसमें हमें एंगल्स से साइड का लेंथ भी पता चल जाती है। So he observed that the angle between the moon and sun in the sky, when the moon is at its quarter phase, at that time the angle is approximately 89 degrees or something, and using that he calculated the distance from sun to earth. But you must be wondering, how did he calculate the distance from moon to earth? That came from eclipses. When he observed lunar eclipse, he estimated the size of moon to be approximately near 1/3 of the earth, since he was observing the shadow of earth on moon. So he watched the shadow of earth on moon and what size approximately the shadow of moon is being casted on, the shadow of earth is being casted on the moon. तो जब चंद्र ग्रहण होता है तब अर्थ की जो परछाई पड़ती है मून पे, चांद पे, तो उसको ऑब्जर्व करके उसने अप्रोक्सीमेट किया कि चांद का साइज कितना होगा। और क्योंकि फिर उसको चांद का साइज पता था और रात में ऐसे उंगली से ढक के उसे पता था एंगुलर साइज क्या है, तो हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि एंगुलर साइज और चांद का साइज क्योंकि हमें पता है, तो हम अब ये डी निकाल सकते हैं, ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ये दोनों पता है। Since we already know the angular size of the moon in the sky and we approximated the size of moon using the shadow of earth on moon during lunar eclipse, we approximated size of the moon. Since we know these two variables, we can easily calculate the distance between the two. So that is how we calculate. In the ancient times our ancestors calculated these things, how far away the sun is, how far away the moon is, and
this is how they did astronomy back in the day. तो ऐसे हमारे जो पूर्वज थे वो पुराने समय में एस्ट्रोनॉमी करते थे और ऐसे उन्हें कैलकुलेशंस करने को मिलती थी, ऐसे उन्हें पता चलता था कि क्या साइज मून का है, क्या डिस्टेंस सन तक का है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि आप इसमें क्या कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट कैन यू डू at your own on your own? So one thing you can do is use your phone for astrophotography. It's a fun hobby. I do it sometimes. And then if you have some money on your hand, if you want to spend some money, you can even buy some binoculars or telescopes to observe the universe in detail. तो अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं तब आप बाइनोकुलर्स या टेलीस्कोप लगा के बहुत अच्छे से बहुत डिस्टेंट चीजें देख सकते हैं। बट अदरवाइज भी अगर आपको ऐसे ही कोई हॉबी करनी है तो आप एस्ट्रोफोटोग्राफी कर सकते हैं किसी ऐसे एरिया में जाके जहाँ पे लाइट पोल्यूशन कम हो। तो अगर आप ये यहाँ पे देखें, ये फोटो मैंने अपने फोन से ली है। तो ये ओरायन कॉन्स्टिलेशन है जिसमें कि ये 3 स्टार होते हैं बेल्ट में, ऊपर 2 स्टार, नीचे 2 स्टार, और ये उसका घुटना है ओरायन का। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो थोड़ा सा ब्लरी एरिया है, अभी इसमें इतने अच्छे से नहीं दिखेगा बट स्टिल थोड़ा सा ब्लरी एरिया आता है। अगर बहुत क्लियर स्काई हो तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे ओरायन नेब्यूला है। तो इस कॉन्स्टलेशन में आसपास में काफी सारे नेब्यूला है, शायद आपने किसी मूवी में भी देखा हो। तो अगर आपके पास टेलीस्कोप हो तो आप वो भी देख सकते हैं, बट अदरवाइज आप ऐसे एस्ट्रोफोटोग्राफी भी कर सकते हैं। Now you can see here there is a constellation named Orion. This is the same constellation here. So the identifying marker of this constellation is these 3 stars in a line that represent the belt of Orion, and these 4 stars around it. And if you can see around the knee of the Orion, there is a blurry area, and that is where the Orion Nebula is. There are multiple other nebulas in this Orion constellation, which you can probably see from a powerful telescope. But otherwise, also without using telescope, you can observe this constellation and look at some fascinating things happening in the night sky. So these are a couple of other photos of the same constellation that I took, and probably using some kind of setting on your phone to observe the sky very with a longer exposure, etc. You can try and use the setting. Maybe you can Google it to capture the stars or capture the planets on your phone. Now it's quite important to have a catalog of all these objects, since we are learning a lot about these things in the night sky. We are uh, naming everything from star to constellation to planets. There are other objects in the sky that we need to keep a catalog of so that we do not misunderstand it for something else. So this was done by an astronomer named Messier. So these are called Messier objects. And in a catalog of his, he cataloged a lot of these objects which are neither stars and nor planets. Now we know exactly what they are, but at that time it was difficult to understand what these objects are. But still he cataloged so people don't confuse it for anything else. तो मेसियर एक एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने ऐसे ऑब्जेक्ट का एक कैटलॉग बनाया जो कि स्टार्स भी नहीं है, प्लैनेट्स भी नहीं है, और सूरज और चांद तो ऑब्वियसली नहीं है। बट उन्होंने कैटलॉग बनाया जिसमें ये सारे ऑब्जेक्ट उन्होंने लिस्ट किए और उनको कुछ ना कुछ M1 M2 ऐसे करके नाम दिए ताकि लोग कंफ्यूज ना हो कि ये कोई स्टार या प्लैनेट तो नहीं है। तो जिसमें से कि आप देख सकते हैं M45, शायद ये वाला ऑब्जेक्ट है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ ये ऑब्जेक्ट है, और ये प्लेडीज है। आप किसी ऐसे रिमोट इलाके में चले जाएं, गांव जैसे इलाके में चले जाएं, तो आपको ये कॉन्स्टलेशन, ये ऑब्जेक्ट दिखेगा, ये प्लेडीज नाम का कॉन्स्टलेशन दिखेगा, और इसको 7 सिस्टर्स भी बोलते हैं। सो दिस इज एन ऑब्जेक्ट दैट यू विल सी व्हेन यू गो टू अ रिमोट एरिया. This is also known as 7 sister, but it's basically a combination of multiple stars in a group. This is also known as M45 in Messier Catalog. So this catalog basically lists the objects that are not single stars or planets.
So there was a set of 110 astronomical objects that were cataloged by the French astronomer Charles Messier. Then these are not the only things that we see in our night sky. This is not the only observation that we can do. There are other observations such as events or something that we observe in the night sky. For example, variable objects. So what these variable objects are, either they are mostly some kind of an event that is happening to some object in our universe. तो ऐसा है कि सिर्फ हम कुछ अलग चीज या कुछ अलग मोशन सिर्फ नहीं देख सकते, कुछ और भी ऐसी चीजें हैं हम जो नाइट स्काई में कभी कभी देख पाते हैं, जिसमें से कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कभी हमें रेयरली ही देखने को मिलती हैं, बट जब देखने को मिलती हैं तो वो बाकी सारी चीजों से काफी अलग होते हैं, तो इनको कहते हैं वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें से क्या होता है, एक तो सुपरनोवा होता है या फिर कोई वेरिएबल स्टार होता है। तो सुपरनोवा एक ऐसा इवेंट होता है किसी भी स्टार के लाइफ में जिसमें कि वो स्टार जो है वो ब्लास्ट हो जाता है बेसिकली, और उससे काफी बहुत हाई अमाउंट ऑफ रोशनी पैदा होती है, बहुत ज्यादा रोशनी पैदा होती है। सो वन ऑफ द थिंग्स दैट इज अ वेरिएबल इन द नाइट स्काई, दैट इज सुपरनोवा। इट्स एन इवेंट इन द lifeline of a star, which we will study later. In lifeline of a star, when the star at the end of its life basically has a blast, and that blast is very bright and very visible in the sky, but it rarely occurs. That's why we don't see it that often. But when it happens, it's easily visible for 3 to 5 days very brightly in the night sky, since it's very bright event. Then there are also other objects such as P Cygni or Mira. These are variable stars. This is because these are pulsating stars. They increase and decrease in size. So these are also variable objects. कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि ब्लास्ट नहीं हो रहे होते, बट फिर भी उनमें कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे कि मीरा या पी सिग्नी, ये स्टार्स के नाम है, जो बेसिकली पल्सेट करते हैं या फिर वाइब्रेट करते हैं। इनका साइज बड़ा और छोटा होता रहता है, इसलिए इनकी ब्राइटनेस भी कम ज्यादा होती रहती है। अब जो हमारा यहाँ का लास्ट टॉपिक है, दैट इज मैग्नीट्यूड। अब हम कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें उसकी ब्राइटनेस का कैटलॉग बनाना भी इम्पोर्टेंट है, ताकि हम पता कर सके कि कौन सी चीज है जो हम इजीली डिटेक्ट कर पाएंगे नाइट स्काई में, या फिर कौन सी चीज है वो जो कि शायद हमारे ज्यादा पास है या ज्यादा ब्राइट है। तो इसका फर्स्ट क्लासिफिकेशन दिया था हिपार्कस ने, और उन्होंने एपरेंट ब्राइटनेस के बारे में बताया था कि कितना हमें प्रतीत होता है कि वो कितना ब्राइट है, चाहे वो करीबी की वजह से प्रतीत हो, चाहे वो इस वजह से प्रतीत हो कि वो बहुत बड़ा है या बहुत ब्राइट है। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू calculate the magnitude or know the magnitude of the objects that you observe in the night sky, since it might tell us if the object is nearby or if the object is very bright, and it also help us categorize things. So the first classification was done by Hipparchus, and he laid out a set rule of for apparent brightness. And apparent brightness simply means it is only the brightness that appears at that distance, because some objects might be bright because they are nearby, or some object might be really bright because they are very large. So brightness 1 refers to the brightest object in the night sky, and brightness 6 refers to the dimmest object in the night sky. And according to Ptolemy, another astronomer's catalog, there are approximately 1,000 stars in the night sky. There are more than that, but according to Ptolemy's catalog, there are approximately 1,000. So this is the categorization that Hipparchus made, from 1 ranking brightest to 6 ranking dimmest. And magnitude as an objective quantity will be m1 is 100 times brighter than m equals to 6. So this is the dimmest and this is the brightest. So between these 5 steps of ranking, the dimmest star is 100 times less bright to the brightest star. तो जब भी हम ऐसा कैटलॉग बना रहे हैं तो इसमें रूल दिया गया है कि जो 6 पे होगा वो डिमेस्ट होगा, 1 पे ब्राइटेस्ट होगा। और पेटोलमी के कैटलॉग में करीब 1000 स्टार्स बताए थे उन्होंने, और जो M1 है वो 100 गुना
जो कैटेगरी ब्राइटेस्ट की है वो 100 गुना ब्राइट है कंपेयर टू M6 जो कि डिमेस्ट है. For each increment, there is an increment of 100 raised to the power 1/5, which is this much, 2.511. So that gives us these formulas for finding out objective quantity of magnitude. तो अगर हमें बिना किसी apparent behavior के, बिना किसी bias के, बिना किसी और फैक्टर के हमें पता करना है कि वो एक्चुअल में कितना ब्राइट है और उसको क्वांटिफाई करना है, तो उसके लिए हमें ये सब फॉर्मूले बनाने पड़ते हैं जिसमें कि हम पता करते हैं कि क्योंकि ये 5 स्टेप में 100 गुना ब्राइट हो रहा है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड में डिफरेंस रहेगा. और फिर हम ये मैथमेटिकल फॉर्मूलाज बनाते हैं जिससे कि हम कैलकुलेट करते हैं कि एपरेंट जो ब्राइटनेस है उसकी क्वांटिटी क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी क्या है. तो ये हम ऑब्जर्व करते हैं. उसके बाद हमने देखा कि हिपार्कस का जो क्लासिफिकेशन था वो एक्यूरेट इतना भी नहीं था, क्योंकि जो उन्होंने बताया उससे भी ब्राइट काफी सारी चीजें हैं, और इसलिए हमने उसको थोड़ा एक्सपैंड किया यहाँ पे. तो मैग्नीट्यूड 7 और उससे ज्यादा में तो स्टार्स हमें दिखते ही नहीं है, बहुत डिम हो जाते हैं. और मैग्नीट्यूड 6 के करीब करीब 3500 स्टार्स हैं, 3500 एंड मैग्नीट्यूड 1 के 8 स्टार्स हैं. देन क्योंकि हिपार्कस ने 1 तक ही दिया था, हम थोड़ा और आगे लेके गए. मैग्नीट्यूड 0 के 3 स्टार्स हैं और मैग्नीट्यूड -1 का 1 स्टार है, दैट इज सीरियस, द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई. तो हमें ऐसे थोड़ा और ऊपर जाना पड़ा. अब अगर हम सन और मून की बात करेंगे तो मून जो है, फुल मून, उसका मैग्नीट्यूड होता है -12.5 और जो सन का मैग्नीट्यूड है वो है -26. तो ये सन इतना ब्राइट है जितना कि ये ब्राइटेस्ट स्टार के कंपैरिजन में 25 स्टेप्स आगे है ये. तो ये हमें एक्सटेंड करना पड़ा इस क्लासिफिकेशन को. सो वी हैड टू बेसिकली एक्सटेंड दिस क्लासिफिकेशन ऑफ magnitude since Hipparchus was not very thorough in his observations. There are 8 stars with magnitude 1 and 1 star with magnitude -1, whereas the magnitude of sun is -26 and for a full moon the magnitude is -12.5. This is because we have extended the category of magnitude because there are more brighter objects in the sky. And this is the basic definitions, some of the basic definitions. For example, luminosity or intrinsic brightness. This is the energy emitted from a source in all direction per unit time. Absolute magnitude is the measure of luminosity of celestial object on an inverse logarithmic astronomical magnitude scale. An object's absolute magnitude is defined to be equal to apparent magnitude that the object would have if we were to view it from a distance of exactly 10 parsecs. अगर हम exactly 10 पार्सेक के डिस्टेंस पे उस ऑब्जेक्ट से दूर खड़े हैं और वहां से ऑब्जर्व करते हैं, तो उसका जो हमारे को एपरेंट मैग्नीट्यूड दिखेगा उसको हमने डिफाइन किया है एज एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड. और ये उनके फॉर्मूलाज हैं जो कि प्रोबेबली हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करने से पहले एक बार इनको भी देख लेंगे अच्छे से. बट फॉर टुडे we are going to recap with telescopic observation, where we learned Galileo pointed telescope towards sky and it led to heliocentric model, discovery of Jupiter's moon and Venus phases. And in Imature Astronomy, we learned about how to orient ourselves, what kind of catalogs we should know about, and what is the magnitude of objects in the sky. So this is Advanced Astronomy. This is for the next session. If anyone has any questions, please feel free to ask. I'm going to stop sharing the screen now. So if anyone has any kind of question regarding today's presentation, or maybe some question that is related to the field but I have not talked about in the presentation itself, you can feel free to ask. Maybe write a message or simply open your mic and ask. So Devashish Goswami has raised his hand. Please feel free to ask a question.
retrograde motion was an observational issue or an actual orbital issue? If I am not So mistaken, it was actually an observational issue because of the not exactly this planets revolving around the sun, but because of the differential period of each of the orbits around the sun. yes, exactly. The Yeah, reason for retrograde motion was because not every object is revolving around the Earth. If they were, there would not have been any retrograde motion. But since they were revolving around Sun and Earth has its own motion to follow, there was an apparent backward motion of the planet. yeah, exactly. But somehow our astrology still makes use of retrograde motion to predict things in reality. Actually, it's a observational issue, not a actual placement issue. Yes. Yeah, that was my Yes, yes, indeed. It's a issue of the perspective where you're standing. Yes. yeah, exactly. Okay, very nice presentation. Thank you. So even if someone has a question that may be slightly out of this topic, you might ask. And if there are no questions, then we can probably leave. I don't see any questions on the messages as well. Please, I would request the Hex Universe team to perhaps if there is a different link today for attendance, I don't know, maybe share that. Yes. So please uh, make sure that you give your attendance. Uh, I guess nobody has questions. So thank you for everyone for joining today. And in the next session, we'll talk about more advanced topics and the latest kind of topics that are going on in astronomy. And till then, have a nice day. Thank you. Thank you, Anirudh. Thank you, everyone.